Hello students, welcome back to your biology class. Today we will discuss about transportation system in plants. In the previous video we discussed about transportation system in human being, that is blood circulatory system and then lymphatic system. Now we will discuss the transportation in plants. So today's topic is transport in plants. As you all know that plants are remain fixed at one position, एक ही जगह पे फिक्स है एंड इवन दे डू नॉट नीड मच एनर्जी, उन्हें ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं होती. फॉर दिस पर्पस दे हैव अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. इस वजह से उनके जो बाकी सिस्टम्स है इवन वो भी एंड विद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आल्सो दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स. Plants need two things to be transported. One, water from roots to the other part of the plant, and second thing is the food which is prepared through the leaves, prepared in the leaves. From leaves it need to be transported to the other part of the plant. So here the transportation in the case of plants is done for two purposes. One, for the water, and second, the transportation is done for the food that is prepared in the leaves. Water is transported through roots to the upper part of the plant and food is transported through the leaves. Now leaves में बन रहा है क्योंकि because leaves contain the chlorophyll and here the process of photosynthesis is done. So food is prepared in the leaf and from the leaves this food is need to be transported to the other part where it is required. It can be any growing part, it can be any storage part of the plant. किसी भी part तक transport हो सकता है food का. तो इन दो चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स के अंदर जो सिस्टम मिलता है ट्रांसपोर्टेशन का, दिस सिस्टम कंटेन टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज. दीज टिश्यूज आर नोन एज वास्कुलर टिश्यूज. सो वी आर वेरी वेल नो दैट प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यू. वन इज जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम. So plants have two types of vascular tissues, one xylem and second one is phloem. Here the xylem is required for the transportation of water. जो water का transportation होगा वो होगा xylem के through, and the food is transported through the another vascular tissue that is phloem. So phloem के through transportation होगा food का. First of all, we'll discuss about the transportation of water. After that, we'll discuss about the transportation of food. So here we're discussing about the transportation of water. Water which is transported from roots to the upper body parts or upper parts of the plants. roots के अंदर water है, वहां से उस roots से soil के अंदर water है, roots absorb water through the soil and then transport it to the upper part. roots से ही water का transportation जो है वो ऊपर की तरफ plant के बाकी parts तक होना है, even leaves तक भी होना है जहां पे photosynthesis के लिए water की requirement है. इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन होता है हम उसके बारे में बात करेंगे. When the height of the plant is very small, अगर प्लांट की हाइट बहुत स्मॉल है then we can say the water can be transported through the simple diffusion method. कि diffusion के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. But for the transportation of water into the tall trees they need the particular tissue that is xylem. उसके लिए उन्हें जरूरत पड़ती है vascular tissue जो कि है xylem की. Through the xylem the water is transported into the plant by two ways. The water is transported into the plants by two ways. One method, or we can say the first mechanism by which the water is transported into the plants is root pressure. First mechanism by which the plant can transport water is root pressure, and second mechanism is transpiration pull. Transpiration pull. So plant adopt these two mechanisms for the transportation of water through roots to the upper part of the plant. We'll discuss first about the root pressure. What happens in the case of root pressure? You know that plants which remain fixed into the soil, it has roots in the soil part, and in the soil we can say that this soil is rich into the minerals or ions. ये जो soil है इसके अंदर minerals और ions present है, साथ में इसमें water भी present है. If through this soil plant absorb ions, or we can say that the intake of ions done by these roots
through the soil. ये जो ions यहाँ पे present है, these ions get absorbed or taken inside the roots by from the soil. Soil से ये जो ions है ये root के अंदर आ जाएंगे. When the root absorb these ions, this means we can say that now water concentration in the soils it become high, and inside the plant or inside the root cells the concentration of water become less. When roots absorb ions through the soil, then water concentration inside the root cells become less as compared to the concentration of water in the soil. Due to this concentration difference, एक concentration का difference बन गया है, यहाँ पे water molecule जो है वो होंगे ज्यादा. It's water is present in the more amount, but inside the roots, inside the root, the water concentration is very less. यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन लेस है बिकॉज आयंस गेट अब्सॉर्ब्ड और आयंस के आने की वजह से एक मींस वी कैन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया व्हिच हैव लो वाटर कंसंट्रेशन. Due to this concentration difference, now water will move from its higher concentration to its lower concentration. Water जो है अपने higher concentration से lower concentration की तरफ move करेगा and finally the water will move inside the root cells. और water root cells के अंदर insert कर जाएगा, enter कर जाएगा. Once the water get entered inside the root cells, then it can be moved upward. ये ऊपर की तरफ move किया जा सकता है through the simple diffusion method से, और due to some physical forces the water can be moved upward due to the root pressure, the pressure which is exerted through the water which is coming inside the root. The water will move upward and it reach to the upper part of the plant. This type of mechanism, this root pressure is applicable only when the plant height is very less. ये सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में एप्लीकेबल हो सकती है मैकेनिज्म जबकि प्लांट की हाइट जो है वो बहुत कम होगी, जहां पे लीव्स, जिन्हें प्लांट वाटर की रिक्वायरमेंट है, द लीव्स आर वेरी नियर टू द रूट्स, जहां पे रूट्स और लीफ के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा. व्हाट विल बी अबाउट द प्लांट्स व्हिच हैव वेरी हाई हाइट? जो प्लांट बहुत टॉल ट्रीज हैं या फिर बहुत टॉल प्लांट्स हैं, उनके अंदर इस तरीके की मैकेनिज्म से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है. For this mechanism, for this purpose, in the tall plants, the water is transported in the tall plants through the another mechanism that is transpiration pull. उन plants के अंदर transpiration pull नाम की mechanism जो है वो help करती है for the transportation of water. So before starting about the transpiration pull, we need to understand that what is transpiration. पहले आपको पता होना चाहिए कि what is transpiration. Transpiration क्या है? Transpiration is the removal of excess water from the aerial part of the plant. Like it could be leaves, it could be stems, leaves, flower, कुछ भी हो सकता है. Plants के अंदर जो excess water है, उस excess water का vapors की form में air के अंदर release होना, that process is known as transpiration. ये आप सबको मालूम है. This transpiration, when plants release water through the stomatas in the form of vapors, at that time they create a pull, and that pull sucks the water through the roots to the upper part of the plant. उस केस में जो plant का part है वो water को absorb करेगा. So this is the water plant, and in this water plant, this is the leaf. This is the leaf. This leaf will release water. In the case of water vapors, यहाँ से water जो है वो release हो रहा है vapors की form में through the process of transpiration. जब transpiration होता है, यहाँ से water release हो रहा है. At that condition, the leaf means water is released through the stomatas. That's why the leaf become the water deficient. यहाँ पे water की कमी हो जाएगी. And due to this deficiency of the water, due to the lack of the water, it will suck the water through its nearby part. ये अपने पास के जो नियर बाय पार्ट है वहां से वाटर को पुल करेगी. And this part means we can say these branches part will pull the water through this stem part. In this way, a pull is created, a suction pull is created. It's just like how we suck the water through the straw. ये सिर्फ उसी तरीके की मैकेनिज्म है जैसे हम एक स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक को या वाटर को जब सक करते हैं. So such type of suction is created through the leaf to the roots. एक suction और एक pull create हो जाएगा जो कि leaf से लेके root तक present रहेगा. And through this pull, the water is transported
जो वाटर जो है वो पुल किया जाएगा ऊपर की तरफ, एंड दिस पुल इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन पुल. ड्यू टू दिस ट्रांसपिरेशन पुल द वाटर इज मूव्ड टू अ वेरी लॉन्ग हाइट ऑफ द प्लांट. वाटर जो है वो बहुत ऊपर तक, बहुत हाइट तक सक कर लिया जाएगा या पुल कर लिया जाएगा. So this is the two mechanism, root pressure and transpiration pull, by which the water transport is done in the case of plants through the xylem. Now let's see which type of mechanism is convenient or suitable during the daytime and which is convenient for the night time. इनमें से कौन सी मैकेनिज्म से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दिन में होगा और कौन सी मैकेनिज्म से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रात में होगा. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत आसानी से आप इसको गेस कर सकते हैं. कैसे? ट्रांसपिरेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ सन. ट्रांसपिरेशन जो होता है वो सिर्फ सन के प्रेजेंस में होता है. व्हेन द वाटर बिकम वेपर्स एंड इट्स रिलीज थ्रू द स्टोमेटास. So transpiration pull is the mechanism of transportation of water during the daytime. तो जो दिन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा इट इज डन बाय द ट्रांसपिरेशन पुल, एंड द रूट प्रेशर इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द नाइट टाइम. So this is the way how which the xylem helps in the transportation of water in the plants. Now we will discuss about the transportation of food. अब हम बात करेंगे how the food is transported. Food का transportation कैसे होगा? You know that food is prepared in the leaves. Food जो है वो कहाँ बन रहा है? Food is prepared in the leaves. Food जो है leaves के अंदर बन रहा है through the process of photosynthesis. Here, the food which is prepared in the leaves is formed in the case of in the form of carbohydrate, that is carbohydrate, that is glucose. यहाँ पे glucose की form में बनेगा. But जो food का transportation होता है, this transportation of food is done in the form of sucrose. Food is transported in the form of sucrose, and the transportation of food or soluble substances from the leaves to the other part of the plant is known as translocation. The process of transportation of food or other soluble substances is known as translocation. उस process को हम बोलते हैं translocation. यहाँ पे जो translocation होगा वो ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन होगा जो फूड का, वो लीफ से किसी स्टोरेज पार्ट तक हो सकता है जहां पे फूड को स्टोर करके रखना होगा, या फिर द ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डन थ्रू द स्टोरेज पार्ट टू एनी ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट. इट कुड बी लीफ, इट ग्रोइंग लीव्स, और इट कुड बी ग्रोइंग बर्ड्स. कुछ भी हो सकता है. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लीफ से किसी ग्रोइंग पार्ट तक हो रहा है, या फिर स्टोरेज एरिया तक हो रहा है, या फिर स्टोरेज पार्ट से किसी ग्रोइंग बर्ड तक या ग्रोइंग लीफ तक भी हो सकता है. एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ टिश्यू व्हिच इज फ्लोएम. किन टिश्यूज की हेल्प से हो रहा है? फ्लोएम की हेल्प से हो रहा है. एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन. बिसाइड्स द फूड, यहाँ पे फूड के अलावा जो कि सुक्रोज है, फूड के अलावा अमाइनो एसिड और आल्सो अमाइनो एसिड एंड सम अनदर सब्सटेंसेस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड. उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. अब हम देखते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, हाउ द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस इज डन इन द केस ऑफ प्लांट्स. As you already know that xylem do the transportation only in the one direction. Xylem के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का वो यूनिक डायरेक्शन में होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा. But phloem do the transportation or translocation of the food in the bidirectional, यानी कि both directions में ट्रांसपोर्टेशन हो. It could be upward as well as it could be downward. दोनों ही डायरेक्शंस में phloem ट्रांसपोर्टेशन करेगा. अब देखें कैसे होगा. Suppose we have made the here that these are the cells which are present in the case of phloem. ये phloem के अंदर मिलने वाली cells हैं which are known as sieve cells. ये जो cells हैं इनको हम बोलते हैं sieve cells because they have sieve like structure, यानी कि इनके अंदर sieve like structure होती है. यहाँ पे cell wall जो होती है वो continuous नहीं होती. They have some gap. The sieve like gap are present, and these gaps are responsible for the transportation of the food material. Food material का transportation करेंगे. So here we have drawn the phloem cells. The cells of the phloem which helps in the transportations are two type of cells. यहाँ पे दो तरीके की cells होंगी phloem की जो transportation में help करेंगी. First is sieve tube cells, and another cells which helps in the companion cell.
companion cells. These are the two cells which help in the transportation. Here in the case of xylem, you also know that tracheids and vessels helps in the transportation of water. In the case of phloem, sieve tubes and companion cells helps in the process of translocation. So these are the sieve tubes. ये sieve tubes हमने यहाँ पे draw की हैं. These are the sieve tubes. अब देखते हैं कि कैसे sieve tube से transportation होगा. Suppose यहाँ पे एक cell है. This is one cell and this cell has high amount of sugar concentration. इसके अंदर stored food है. इसके अंदर एक high concentration में sugar solution present है and this sugar solution need to be transported. And one more cell is here. This cell has very low concentration of sugar. यानी कि ये वो सेल है जिसे फूड की रिक्वायरमेंट है. ये वो सेल है जहां पे हाई अमाउंट में फूड प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ शुगर. एंड दिस इज द सेल व्हिच रिक्वायर्स सम मोर शुगर. मींस दिस कुड बी अ ग्रोइंग सेल. ये ग्रोइंग सेल हो सकती है जिसे फूड की रिक्वायरमेंट है. So here the requirement is to transport these food substances. इस food substance को इस सेल तक ट्रांसपोर्ट होना है. इस यहाँ तक इसे ट्रांसपोर्टेशन करना है. आप देखेंगे कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन होता है. इट्स नॉट सच एज इजी. ये इतना इजी नहीं है कि जैसे यहाँ से सीधा यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. इट्स नॉट सो मच इजी. इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को करने के लिए टिश्यू रिक्वायर्ड है, दैट इज द फ्लोएम. फ्लोएम के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होगा. अब फ्लोएम के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, लेट्स सी what happened. Here we will discuss some important steps. As this cell has high concentration of sugar, this high concentration of sugar of this cell is now transported. This sugar is transported in this phloem cells. ये इन phloem tissue की sieve tube cells के अंदर, sieve tube के अंदर load कर दी जाएगी. This process is known as loading. This process of transportation of sugar or sugary substance, that is the food, is transported into the phloem cells. This is known as loading. इसे हम बोलेंगे loading. And this loading is a active process. ये जो loading है ये एक active process होती है. Active process means this process require energy. एक्टिव प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड एनर्जी व्हिच इज यूटिलाइज्ड हियर इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. प्लांट्स यूटिलाइज एटीपी व्हिच इज द स्टोर्ड एनर्जी. दिस स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम दीज फूड रिच सेल्स टू द फ्लोएम सेल्स और सीव ट्यूब्स. इस सेल से इस फ्लोएम सीव ट्यूब्स के अंदर फूड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एंड बिकॉज इट्स एक्टिव प्रोसेस. अब क्यों यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए. हमने देखा था जाइलम में कहीं कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी. जाइलम्स ट्रांसपोर्ट द वाटर ओनली ड्यू टू द सम फिजिकल फोर्सेस. सिर्फ फिजिकल फोर्स को यूटिलाइज करते हुए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था जाइलम में. बट इन द केस ऑफ फ्लोएम इट यूटिलाइज एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज इसलिए की जा रही है क्योंकि at some times we can see that here the sugar concentration could be equal. यहाँ पे sugar concentration इस सेल के अंदर और इस सेल के अंदर sugar concentration same हो सकती है. At that time the movement of this sugar substances from one cell to another is not possible due to the concentration difference. तो concentration difference तो हुआ नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता. फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज द अपोजिट और इन द सेम कंसंट्रेशन द मूवमेंट इज डन. यहाँ पे मूवमेंट जो हो रही है वो सेम फोर्स में हो रही है, सेम कंसंट्रेशन में हो रही है. दैट्स व्हाई द एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो फर्स्ट प्रोसेस इज डन, दैट इज लोडिंग. लोडिंग हो जाएगी. लोडिंग का मतलब नाउ दिस sugar substances, these sugar molecules will come inside this sieve tube and this will become, when these sugar substances come inside this sieve tube, they will create a pressure. ये एक pressure create करेंगे. They will create a pressure. यहाँ पे pressure generate हो जाएगा. We can say that high pressure is created here when these sugar substances, sugar molecules come inside this sieve tube. So when what happens now? These sugar substances are here and due to the presence of this sugar substances the water concentration become low और water की concentration जो होगी यहाँ पे low हो जाएगी. Due to this low water concentration the water which is running in the xylem which is present very near to these phloem cells, यहाँ पे साथ में ही xylem present है which is transporting the water. Water is present in the xylem vessels also.
यहाँ पे xylem vessels present है जिसमें water transport हो रहा है. And when the water concentration become low here due to the presence of high sugar concentration, the water will move inside these phloem cells. Water will also move inside the phloem cell. So here we can know that water is also present here. अब water भी यहाँ पे present हो जाएगा. And due to the presence of these water molecules and these sugar molecules, high pressure area is formed here. यहाँ पे एक high pressure area form हो जाएगा. And this is due to this high pressure area, the water, this complete substances that is present inside the cell, they will transport this toward the low pressure area. अब ये जो सारे substances होंगे जो इस cell के अंदर present है, ये transport होंगे to the low pressure area. First we need that this is the due to the osmosis. यहाँ पे osmosis हो रहा है जिसके थ्रू water xylem से phloem के अंदर enter हो रहा है. और वाटर जैसे ही यहाँ पे आया सीव ट्यूब के अंदर, it created a high pressure area, and now these sugar substances will move from its high pressure area to its low pressure area. ये low pressure area कहीं पे भी हो सकता है, it could be upward or it could be downward. In our example, in our case, we have created the low pressure area downward. हमने नीचे की तरफ बनाया है. So these substances need to be transport downward. Substance जो होंगे वो नीचे की तरफ transport होंगे. In this case, now after creating a high pressure area, these substances are transported downward, and this transportation is known as bulk transport. We will label the numbering. This is the first process, loading. Second, osmosis, and now third process is done, that is bulk transport. यहाँ पे bulk transport होगा. Bulk transport means the transportation of whole material. सब कुछ transport होगा जो कि यहाँ पे cell के अंदर present है. That whole substances are now transported to the low pressure region. Low pressure region की तरफ transport होंगे. And due to this transportation, finally all these sugar molecules with the water molecules will come at these cells. यहाँ पे इस cell के अंदर यहाँ तक पहुंच जाएंगे. And when they will reach here, जब यहाँ पहुंचेंगे, due to the bulk transport, the sugar substances, due to their concentration difference, here the sugar substances are present in high concentration, and here sugar substances are present in low concentration. So finally, the sugar substances or food material will go out in these cells due to their concentration difference. This process is known as unloading. This is known as unloading. कि यहाँ से अब sugar जो होगा इस cell से इस cell को पहुंच जाएगा. So finally we can see that from one cell which have high amount of food material is transported to the cells which have very low amount of food material or which require the food material, जिसे food की requirement थी, with the help of phloem. इस तरीके से phloem की help से finally the food will or sugar will reach to these cells, and in these cells or it will become the high sugar concentrated cells. यहाँ पे इस sugar इस cell के अंदर जो transportation हो जाएगा. So we can write the fourth process. We can write the fourth process here. Fourth will be unloading. अब होगा unloading जिसके अंदर cell से sugar इस required cell के अंदर और growing cell के अंदर transport कर दी जाएगी. When sugar will reach here, जब sugar यहाँ transport होगी, at these phloem cells, these sieve tubes, now water concentration become high. क्योंकि sugar तो यहाँ से निकल गए हैं, sugar molecules, रह क्या गया? Only water molecules, and the water molecule concentration become high here. And due to this high water concentration, water will move back into the xylem. Water जो है वो फिर से xylem cells के अंदर transport हो जाएगा again due to the osmosis. फिर से osmosis की वजह से. And in this way, we can say that transportation is done in the case of food, in the case of plants, and this transportation is through the phloem, and this transportation required energy. That's why we call it active transportation. Here we have seen that some important steps. That first is the loading, in which the sugar substance is transported into the sieve tubes. After that, osmosis is done, by which the water which is present in the xylem will also move inside the sieve tube, and high pressure area is created here. Due to this high pressure, the substances will move towards the lower pressure region. Substance जो है वो lower pressure region में move करेंगे, and this transportation is done through this phloem.
सीव ट्यूब्स, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप प्रेजेंट है, तो इनके थ्रू या इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. And when they reach to these cells, the sugar will transport to the required cells, and water will come back to the xylem through the osmosis. So this is the way how which the plants transport both important substances, that is water as well as food, through the transpiration. Here the transpiration is required for this transportation of water, and in this the translocation process is the important process by which food is transported. So with this, we completed this portion, that is transportation system. With the next video, we will discuss about the next topic of our life processes chapter, that is excretion. So keep watching, keep studying, and keep learning. Thank you.